Abhishek, would you like to do your readability check? If my voice is clear to you. Mumbai Tower, Victor Tango, Alpha Bravo Bravo. Victor Tango Alpha Bravo Bravo Mumbai Tower. Go ahead. Mumbai Tower, Victor Tango, Alpha Bravo Bravo on 195.23. Good evening. How do you read me? Victor Tango Alpha Bravo Bravo. Good evening. Read you 5 Mumbai Tower. So everyone will look at the call structure now that I'm going to show you. Is this a screen visual to you all? The blank page? Yes, no, maybe anyone? Okay. Well done. So on your blank paper, what is the accepted mode of writing the radio telephony phase is you need to split your page in two parts like this. One portion will be reserved for transmission and another one will be reserved for receiver end. This one is for transmitter end, this one is for receiver's end. What does it really mean, the transmitter end and receiver end? It means whatever the things that speaker is saying will write in this section here on the left side of the page. And whatever the things the receiver will say, the speaker only will write the words that has been transmitted through receiver end on the second part of the page. What does it really mean? I'll show you the example. सबसे पहले, everyone has found me as a Mumbai Tower today. No one noticed. Hemkant has noticed the change in radio frequency. And Abhishek was on previous note that I had said 1 day ago. No problem. Let's go even. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पेज को स्प्लिट करना है ऑन टू पार्ट्स. एक साइड रहेगा आपका ट्रांसमिशन, एक साइड रहेगा आपका रिसीवर. ठीक है, जस्ट मेक अ नोट. व्हाट डज इट रियली मीन? इसका मतलब है बीइंग अ स्पीकर यू ओनली. ठीक है, आप ही खुद अपने एंड पे. लाइक यू आस्क्ड मी अर्लियर, मुंबई टावर Victor Tango Alpha Bravo Bravo. You had raised your station, right? आपने स्टेशन रेज कर दिया, राइट? तो आपको इस साइड में ऐसे लिख देना. Then in reply, what tower told you or what control told you? He also raised a station to you. He told, like I had replied, Victor Tango Alpha Bravo Bravo Mumbai Tower, go ahead. ठीक है, what I said, Victor Tango Alpha Bravo Bravo Mumbai Tower, go ahead. So आप क्या देखोगे,
आप एक पेज पे जब लिखना स्टार्ट करोगे तो क्या करना है कि सबसे पहले आप पेज को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करोगे। ठीक है, आपने जो कुछ भी बोला पहले उसको पूरा लिखोगे, जो कुछ भी बोला आपने, एंड मेक द प्रैक्टिस इज सच that you will write and you will speak as you are writing, not you will write as you speak, you will speak as you are writing, means जैसा आप लिख रहे हो आप उसको सिंपली वैसा ही बोलोगे। पहले आपको लिखना है, then you need to speak. For the example, if you are going to write Mumbai Tower, Victor Tango Alpha Bravo Bravo. Are you getting my pace? What I am doing? I am writing and speaking at the same time, but just for a while, 1 सेकंड के इंटरवल पे मैं पहले लिखता हूं देन बोलता हूं। और आपको क्या करना है, आप अपना पूरा इंफॉर्मेशन जो भी आप बोलोगे इस साइड पे लिख लोगे। नाउ योर ट्रांसमिशन इज कंप्लीटेड। अब आपको जो लिसनर है, आपका जो रिसीवर एंड है, उसने जो भी रिप्लाई दिया आपको उसको नोट डाउन करना है, उसे भी नोट डाउन करना है, एकदम एग्जैक्ट रीडबैक देना है। रीडबैक मीन्स transmit back to me exactly as you received. In reply, tower told you Victor Tango Alpha Bravo Bravo Mumbai Tower, go ahead. Right? Tower has replied this to you. So your formatting will be such कि एक पेज को इस हिसाब से स्प्लिट करना है विदाउट गिविंग एनी लाइन। आपको खुद से ये एज्यूम करना है आपने इतने सेक्शन में अपना मैसेज कंप्लीट कर लिया। नाउ अब आप दूसरी तरफ जो रिसीवर्स का मैसेज आपको रिसीव हुआ उसे लिखोगे। इस बीच में देख रहे हो कुछ, मैंने जो रिसीवर का मैसेज लिखा है वो इस एरिया में भी लिख सकता हूं मैं, यहाँ पे भी, बट आई हैड नॉट रिटन एनीथिंग देयर। व्हाई? बिकॉज आपको सेपरेशन देना है इन बिटवीन योर मैसेज एंड द रिसीवर्स मैसेज। सेपरेशन देना है लेंथ का ऑलवेज। In this manner, you are going to write every telephonic conversation. Everyone got it? Any confusion there? आपको इस एरिया में कुछ नहीं लिखना है, ना ही इस एरिया में लिखना है। आपने जो बोला उसको आपने यहाँ लिखा। नाउ जस्ट इसके नीचे जहां पे आपका लाइन खत्म हुआ, आपको लाइन देने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू पुट एनी लाइन, एनी बार, नथिंग। जैसे ही आपका मैसेज यहाँ खत्म हुआ, जस्ट बिलो टू दिस लाइन आपको वापस से टावर का रिप्लाई लिख देना है, वॉट एवर द रिसीवर्स रिप्लाई टू यू। गॉट इट? व्हाट ही रिप्लाइड? विक्टर टैंगो अल्फा ब्रेवो ब्रेवो मुंबई टावर। एम आई क्लियर टिल नाउ? आपको इस एरिया में नहीं लिखना है और ना ही इस एरिया में लिखना है। What you will do next, आपको अगेन द कंटिन्यूएशन ऑफ Hello. दैट हाँ बोलिए। Hello. यस यस यस। Sir, my doubt is while raising it, I mean raising the station or giving a call, anything. At that time, like we have written Mumbai Tower. So which one is good to specify that BABB Tower or MUM? Which one we should give? Yes yes yes, we'll come on that point. See, there is abbreviation for all those things, right? VABB
is nothing but the airport code for Mumbai. So make your note shorter. You can write VABB instead of Mumbai. This is acceptable every time. Understood? You can write VABB. No need to write Mumbai every time in your call. This will consume more time, right? वो आपका Okay, ज्यादा sir. time. Sir, VR also we can put Yes, or yes, yes. okay. You can put the similar VR codes like for the Mumbai. The VR can be, I think it's BB. What is it for Mumbai? If you remember, Yes, sir. Bravo, bravo, bravo. you can write similar also, right? But this will looks more better if you write this for Mumbai. आप डायरेक्ट व्यूआर कोड थोड़ा सा कम यूज करोगे, मिनिमम. आई डोंट से कि यू विल नॉट यूज एनी काइंड ऑफ शॉर्टकट्स व्यूआर कोड, बट यू नीड टू यूज इट मिनिमम. कम से कम यूज करना, राइट? दिस इज अनदर एग्जांपल फॉर यू. ठीक है, बाकी एवरीवन Okay, sir. लिख लिखने का वो समझ गए फॉर्मेट, हाउ यू नीड टू राइट. Yes, sir. आपको हमेशा उसी फॉर्मेट में लिखना है जहां पे आपने ट्रांसमीटर एंड का मैसेज लिखा. जस्ट बिलो दैट आप रिसीवर एंड का मैसेज लिखोगे, जो भी उसने आपको बोला. देन अगेन you are doing something in continuation, right? What you will do, again आपको कुछ बात करनी है आगे, in continuation to this message only. You will write just below to that. Understood, everyone? Am I clear? Everyone समझ गए इस चीज को? अजीत, I think you have joined now only, just now. Is this clear to you? That whenever you are going to write your message, the left, you can split your page into two parts. Left portion will be for transmitter, right portion will be for receiver end. आप अपना मैसेज एक बारी में पूरा लिखोगे और दूसरे एंड का मैसेज जस्ट बिलो योर लाइन फॉर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट मैसेज. डोंट राइट एनीथिंग हेयर. रिसीवर से जो आपको मिला वो आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, नॉट अलाउड. एंड in the continuation of this message also, if you are going to speak again something, आपको फिर से यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है. How you will write? Here only. Everyone got it? Yes, sir. Good. So that was the method of writing. So you can see in the people's there is an option for participants, right? There is an option in the Zoom chat for participants where you can see how many participants are there, right? आप सब इसको एक बारी ओपन करो.
मैं दिखाता हूँ किसको ओपन करना है. In your Zoom application, there is an option for participants. ठीक है. What is visible to you? There is an option for participants. This one. वहां पे आप देखो आज मेरा नाम क्या है. What is my actual name there? Mumbai Control. Very good. So I'm going to teach you now how many types of ATC controls generally you will found on airfield. Right. Okay. Generally, ATC officers. What is ATC? Air traffic controllers. Right. So, generally in the ATC offices, what are the offices? You can see there, they are surface movement controllers. Everyone, please note it down. Surface movement control office. Then you may see tower. Then you can see approach. And you may see area control center. And in short, this is called as control. You may see TMA. You may see TMA sometimes in the control chart, E-chart or whatever the hypothetical charts given to you. You may see TMA, but this TMA is also called as a control only in a day-to-day usage of ATC. If you look at the charts, see here you can see what are the ATC offices available. SMC, Surface Movement Control. In short, you can call it ground. Am I clear? Then tower, then approach. This is control, area control center, or in short, this can be called as control. But in the detailed chart, you may sometimes notice, so what is written there? Delhi TMA, it's TMA. And in this region also, either. Where is Nagpur? Nagpur is here. Where is Bhopal? Either. And ये जो आपका कंट्रोल बाउंड्रीज है, ये है यहां से यहां तक. This. In this section, I'm going to change the color so that you can read better. In this section,
आपको किससे बात करनी पड़ेगी? इफ यू वांट टू रियली कोऑर्डिनेट, आपको बात करनी पड़ेगी नागपुर से। बट नागपुर के किस से? ग्राउंड से, टावर से, अप्रोच से और कंट्रोल से। कौन से एटीसी ऑफिस से? यू नीड टू टॉक विथ नागपुर टीएमए, लिखा है ना इधर, तो यू नीड टू टॉक विथ नागपुर कंट्रोल रूम। Understood? While checking the detailed charts, we will come to know actual में किससे बात करनी है, right? So, how many ATC offices may be there? There are 5. Area control center, in short, you can say it control. Aerodrome control tower, in short, you can say it tower. Surface movement control, that is called ground. Apron control, you may not see this every time. You are not going to see apron control every time. But there is also provision on some airport to have apron control. And then there is radio. Radio FIR. This is not a first information report. What is it? Flight information region. Flight information region. On a bigger scale, you can see it. What is it? Delhi FIR and Mumbai FIR. Delhi flight region, Mumbai flight region. All these airports, Ahmedabad, Bhavnagar, Mumbai, Aurangabad, Nagpur, Bhopal, all these comes under Mumbai flight region. And Jaipur, Jodhpur, Karachi, not Karachi, Karachi is outside our country, Agra, Gwalior, Jaipur, including Delhi. These comes under Delhi flight region. Okay. You will get it later. So everyone had noted down how many types of ATC offices are there. Is that clear to you all? I think Ajit had joined us as ... His name is ... Ajit, is that you? If you can't speak, just give me a thumbs up or any hi, raise your hand. This is possible. Okay, okay, Jiva. Good. So now you have seen how many ATC offices are there. And you have also seen how to note down your calls during your communication. Don't be fast then you are writing, and don't try to speak before you are writing. Always maintain your pace with your hand. The speed that you can maintain in your writing, your voice can be of some delay, but cannot be prior to the notes. जो भी आप लिखोगे ना, थोड़ा सा पहले हो सकता है, लिखना बोलने से पहले हो सकता है, but don't ever try to speak before writing. क्या होगा अगर आप लिखने की प्रैक्टिस बनाओगे, and in the entire session of RTR I am going to teach you one thing only: write as much as you can, as much as you can. आपको कभी भी
किसी भी टाइप का डेफिनेशन, थॉट, आइडिया, जो कुछ भी मन में आए ना, उसको लिखो। भले आपको वो लिखना बोरिंग लगे, भले आपको वो लिखना थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगे, लेकिन प्लीज आप उसको लिखो। Why this is important? Because if you write as much as you can, आपको जो बोलने की प्रैक्टिस रहेगी ना, वो हमेशा से होती रहेगी। प्लस अगर आप उस चीज को कहीं पे लिख लिया आपने, एंड अगर आपको उसे बोलना है, ठीक है, और दोनों में से कुछ भी मिसमैच हो रहा है, लेट मी शो यू विद द एग्जांपल हियर, कुछ भी मिसमैच हो रहा है, वो आपका रिकवर हो जाएगा। यू आर नॉट गोइंग टू लूज any of the concept, any of the instructions, right? For example, if I'm writing here something, anything I can write, right? So if I'm writing here this one, and by mistake I had written something wrong, let me show you what wrong I can write. Like this, I can write as much as speed I can. तो अगर लिखने और बोलने के टाइम अपना पेस मेंटेन रहेगा, सो हाउ इट विल गोज, मुंबई टावर, विक्टर टैंगो, अल्फा नवंबर किलो, 1 2 3 4 5 5 3 2 4 1। तो जो भी हम ये लिखेंगे ना, 5 4 3 2 1, ऐसा कभी भी नहीं करना है कि पहले बोलना है देन लिखना है। आपको हमेशा फोकस करना है कि पहले लिखो तब बोलो। 3 2 1 4 5, ठीक है। इससे क्या होगा, एट एनी टाइम इफ यू आर मिसिंग समथिंग, ठीक है, तो वो आप बोलते टाइम उसको करेक्ट कर पाओगे। अगर आपको बोलना है मुंबई टावर एंड बाय मिस्टेक यू हैव रिटन मुंबई कंट्रोल, तो जब आपका दोबारा से इसके ऊपर नजर जाएगा, आपको लगेगा अरे अरे ये तो मिस्टेक हो गया। देन यू कैन से करेक्शन एंड you can write the correct call sign that is being used in that call. Got it? So this is the benefit of writing before speaking. आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आप पहले उस चीज को लिख लो, then only speak that thing to you. Okay? तो अगर आपका कभी भी कुछ भी मिस्टेक होगा ना, आप उसको करेक्ट कर पाओगे टाइम रहते हुए। Is that clear to you? And one more thing, in this class, कोई भी कैंडिडेट कभी भी जो भी टेलीकम्युनिकेशन करेगा, एवरी टाइम उसको पहले अपने नोट्स पे लिखेंगे, देन ओनली यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट योर ट्रांसमिशन। एंड किसी से भी किसी का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभिषेक ने जो अभी कॉल साइन दिया, तो अभिषेक ने क्या लिखा अपने नोट्स में, और I can ask for readback from any one of you so that I can make you attentive. Whatever Abhishek is saying, if you want to pay attention, then assume a scenario कि किसी एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट हो रहा है, some aircraft in emergency, being a co-flyer, being a pilot of aeroplane flying near to the aeroplane,
आप अगर उस पर अटेंशन नहीं दोगे, आप अगर उस पर ध्यान नहीं दोगे, तो हाउ यू कैन हेल्प देम। अगर रोड पे चलते चलते किसी को कुछ हो जाता है तो आप उसको हेल्प करते हो ना। सिमिलरली इन द एविएशन ऑल्सो, वाइल फ्लाइंग, अगर किसी को कुछ इमरजेंसी रहता है तो उसका हेल्प करता है, बट यू कैन नॉट सी बिकॉज डिस्टेंस आर मच अवे। सो हाउ यू कैन हेल्प, थ्रू लिसनिंग। तो अगर आप एक दूसरे की बातें सुनोगे नहीं तो हाउ यू आर गोइंग टू हेल्प। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो बी अटेंटिव while listening others also, what he is actually saying, so that you can provide assistance related to the call. Understood everyone? Getting my point? Always keep your pen and paper handy so that you can write whatever the others are speaking. Is that clear to you all? Yes. Very good. So we'll take a break of 5 minutes. We'll come again and we are going to read again the airport's terminology, airport structure, and other definitions related to the airports. Okay. Again, by writing ID and password, you can join us back. Take a break of 5 minutes. We'll meet after the break. So, Abhishek, can you read my call sign for me? Can you read my call sign? What is my call sign? Mumbai control. Frequencies. What is the frequency there? What is the frequency written after call sign? What is the calling frequency? 1903 the decimal 285. Now, this is airport view for you again, right? Yesterday, about runway, apron, taxiway, ramp, stands. These are the things, right? Today, guys, be little interactive so that I can know, how much you are getting, because these things are really important. These things are one-time concepts. आपको बस एक ही बार में सब कुछ समझना है, and you need to remember it for a long, हमेशा के लिए इस चीज को रट जाना है, ठीक है? So
You have seen apron, stands, ramp, runway, everything, right? Now, in this area, you can see there are these strips, these straps. Have you seen that? ये ऐसे ऐसे करके like zebra crossing. There are many white strips, right? Basically, these strips are made for touchdown point of an aircraft. Touchdown point. If aircraft is about to land, the aircraft can touch their landing gears. If an aircraft is about to land, aircraft can touch their landing gears on or after this touchdown point. And this is also known as runway threshold. What is the spelling of threshold? This is S. Runway threshold. So everyone please note it down. The runway threshold. This is very important definition that is being asked in question number 5. Most of the time, they'll ask you definition directly. So for the definition of threshold, just write two things, nothing much, but you need to understand it in a well manner so that you can define if someone asks you about runway threshold. Note it down, everyone. Beginning of a runway available for landing. This is the basic example for the runway threshold. Beginning of a runway. If you look at this side, this is the beginning of runway almost, right? This side also. If you want to look at the runway from this side, this is the beginning. If you want to look at the runway from this side, this is the beginning. So the definition is beginning of runway available for landing. Then one more thing come, touchdown point. This is also the point on a runway on or ahead of that an aircraft can make landing. The point on the runway, RWY, this is shortcut of runway. You can make a note, you need to use every time. The point of the runway on or ahead of that an aircraft can make landing, right? Aren't you find this runway threshold and touchdown point familiar to you? Right? This runway threshold and touchdown point is almost similar. Why? Because if you look at here,
This is also a beginning of runway, and aircraft can make landing on or ahead of this. Here also, aircraft can make landing on or ahead of this. So this is touchdown point also, and this is also called as runway threshold. Am I clear till now? Any problem? Any doubt? Yes, no, maybe. You can use emojis in the chat box if you want to understand. Okay, I'm going to say it again. Runway threshold means beginning of a runway, runway का starting point, which is available for the landing of aircraft, and the touchdown point. Touch means छूना, down नीचे. एयरक्राफ्ट का व्हील जिस पॉइंट पे टच करेगा वो होता है टचडाउन पॉइंट. So this point is commonly known as either runway threshold or touchdown point. Okay. So in the question number 5, if the question is such, define runway threshold, you need to write beginning of runway available for landing, or you can say the touchdown point of runway available for landing. Okay. So that you can define threshold in a very clear way. What is the runway threshold? Beginning of runway available for landing, or touchdown point of runway available for landing. Okay. This is the standard definition that you need to write in an exam. But if the examiner asks you to explain it more, you can explain in this way. The point of the runway on or ahead of that, an aircraft can make landing. That is touchdown point for you guys, right? So threshold is clear to you. Now, understand, is that threshold clear to you all? सब लोग समझ गए? What is threshold point? Yes, sir. And there is one more terminology, aiming point. Aiming, aim means क्या होता है कि आप निशाना लगा रहे हो, ठीक है? एमिंग पॉइंट, एमिंग पॉइंट भी रनवे पे डिफाइंड रहता है. आप देख रहे हो इस रीजन को, इस रीजन को आप देख रहे हो ना. आफ्टर थ्रेशोल्ड, रनवे का थ्रेशोल्ड रहता है ये. इसके बाद दो चौड़े चौड़े, थोड़ा सा वाइड, नॉट एज थिन एज सेंटर लाइन, थोड़ा थोड़ा वाइड स्ट्रिप है ना. अगेन दीज आर एमिंग पॉइंट्स. पायलट एम करता है कि यहाँ पे या यहाँ पे नहीं भी कर पाए ना तो एटलीस्ट यहाँ पे हम लैंड कर लें, यहाँ या इसके बाद हम अपना एयरक्राफ्ट लैंड कर लें. These things are very important while you are going to make a call regarding touch and go in future, and while you are going to make a call missed approach, तब आपको डायरेक्ट यूज आएगा थ्रेशोल्ड का. तो प्लीज वहां पे कंफ्यूज मत होना, बिकॉज रिपीटिंग दीज थिंग्स ऑन अ सिचुएशन आंसर्स इज अ टफ फॉर यू गाइज. अगर आगे की क्लास में आपको थ्रेशोल्ड, लैंडिंग जोन, अप्रोच जोन, टच डाउन जोन ये सब क्लियर नहीं रहेगा ना तो आपको कंफ्यूजन होगी बार बार. ठीक है, समझ गए? So these three things you need to be very clear.
threshold point, aiming point, and touchdown joint. Threshold is this, जो थोड़ा सा व्हाइट कलर में, बोल्ड व्हाइट, इवन रनवे पे भी ना ये सब का ट्रांसपेरेंसी अमाउंट 50 to 70% रहेगा, बट ये 100% विजिबल रहेगा आपको। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, थोड़ा सा बोल्ड दिखेगा। ये होता है एमिंग पॉइंट। ठीक है, और just ahead of and before of aiming point, just ahead and before of aiming point you can have a zone। ये जोन बन रहा है ना एरिया, इसको बोलते हैं हम लोग टच डाउन जोन सॉरी। अगर एयरक्राफ्ट इस टच डाउन जोन पे लैंड नहीं कर पाया किसी भी रीजन से, तो आइदर वो रनवे ओवरशूट कर जाएगा या ब्रेक लगाएगा काफी हेवी to stop the aircraft। what it can make, it makes their brakes hot। उसका ब्रेक गर्म हो जाएगा, उसमें आग लग सकती है। उसका थर्स्ट रिवर्सर एक्सेसिव पावर पे चला जाएगा, जो इंजन पे एडवर्स इफेक्ट डालेगा। सो द बेस्ट प्रैक्टिस इज लैंड योर एयरक्राफ्ट इन द टच डाउन जोन ओनली। Everyone understood what is threshold, touchdown point, touchdown zone, sorry? Yes, sir. Done. The new thing is for you now is a center line. Very simple, nothing to worry about that. This is runway center line, middle part of a runway, middle intersection of a runway. This is runway center line. By the name it is clear, center means क्या होता है, बीच में। तो रनवे के विड्थ के अकॉर्डिंग जो बीच में लाइन होता है उसको बोलेंगे सेंटर लाइन। डोंट टेक इट एज अ लॉन्गिट्यूडनल, ऑलवेज टेक इट एज अ हॉरिजॉन्टल। आपको हमेशा इसको सेंटर लाइन बोलना है। कभी भी ये मत सोचना कि इफ माय रनवे इज 400 meters ऑफ लेंथ, तो हमारा जो रनवे का सेंटर लाइन होगा वो ये होगा, बिकॉज आवर रनवे इज 400 मीटर विड्थ, सॉरी इन लेंथ। तो जो 200 मीटर पे एक थ्रेशोल्ड आएगा, ये हो गया हमारा रनवे सेंटर लाइन। नो, रनवे के विड्थ का सेंटर पॉइंट, वहां से जो लाइन पास करेगी वो हो गई हमारे लिए रनवे सेंटर लाइन। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? देन Yes, sir. you are also seeing a point pre-threshold, right? Pre-threshold. This is pre-threshold, pre-threshold, threshold से पहले। ठीक है, by its name this is pre-threshold, लेकिन इसका यूज आपको नहीं आएगा कभी, don't worry। In the real time apron you are not going to see any pre-threshold। Why? Because in today's date we are using both side of runway every time। हम इधर से भी लैंड करते हैं एयरक्राफ्ट, इधर से भी लैंड करते हैं, इधर से भी टेक ऑफ हो सकता है, इधर से भी टेक ऑफ हो सकता है। सो यूनिडायरेक्शनल रनवे नहीं है, इसीलिए हमारा रनवे के पास अभी प्री थ्रेशोल्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, देन you may see runway lighting। Runway lighting I'll come to you later। This is wrong definition here, don't confuse with this। I will come on lights just after completing the definitions। Are all these points you are noting down? Everyone, are you noting all these things? Because these things are important, guys। You will get Yes, sir. all these things in my notes, but you need to make sure कि आप उसको अभी समझ लो, बिकॉज इन फ्यूचर अभी जो इतना मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ ना,
Some students may also feel कि कितना धीरे पका पका के पढ़ाते हैं, right? लास्ट में इन चीजों को दोबारा से पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। अगर दोबारा से आप यहाँ पे आओगे ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, वेरी कंफ्यूज। समझ रहे हो? देन समथिंग यू आर सीइंग हियर, रनवे डेजिग्नेटर। Runway designator. What does it really mean? Runway designator means runway number. It means the angle of runway center line in respect of magnetic north of Earth. Everyone got it? Runway number means the angle of, runway center line in respect of magnetic north. Everyone, please note it down. Runway number means the angle of Earth, magnetic north, and the runway center line. So, if you are saying somewhere runway 34, it means runway is on 340 degrees of Earth. Okay, I'm explaining these points to you. Just for a second. This is very beautiful topic and you need to use it every time. Okay. Very important topic this is, and you need to get it by your heart. आपको बहुत अच्छे से इसको समझना पड़ेगा, ठीक है? This is going to be used multiple times. रनवे का जो नंबर होता है ना, एक मूवी अभी आई थी अभी, आई थिंक अजय देवगन की, and the name of that movie is, what was the name? Runway 34. But you won't say it runway 34. What you can say instead? Runway 34. Now, let me show you on a chart so that you can understand it. What is actual runway number and how it is being used. Okay. Is my screen visible to you all? Done. Yes, sir. Okay. Suppose this is a center. You can assume it as a Earth. ठीक है? ये जो आपका एंगल है, ये होता है 0 डिग्री, राइट? At the same time, this is 360 degree also. This is 90 degree. This is 270. Or am I wrong? Sorry. This is 180. This is 180. This is 180. This is 270. Right? So, if someone say runway 34, what does it really mean? This runway is making angle of 340 degrees.
right? If someone is saying runway 08, it means this runway is making 80 degrees, 80 degrees with the earth magnetic field. Am I clear till now? Everyone getting this point, right? Yes, sir. So whenever you are going to see runway 27, runway 04, what does it really mean? That runway is making an angle of uh, runway is making an angle of 40 degrees. Runway is making angle of 80 degrees. Is that clear to you all? So if you find on the runway, this is center line, right? And you may find somehow here, this is written 1, 2. What is really mean? This runway is making 122 degree on a hypothetical earth magnetic field, right? Everyone got this? Yes, sir. Very good. You are going to use it on multiple times. So don't be confused there. Now, everyone got it? What is runway designator? Abhishek, can you tell me what does it really mean? This is written 27 here. What is it? Sir, it is the angle that the runway center line makes with the magnetic north. And what is the actual angle here? Where's it? What is the actual angle here? If you find 27, what is the angle of center line or It is what is? 270 degrees, sir. Very good. Very good. And I'm glad that you are saying 270 instead of 270. Very good. This is the way you need to pronunciate or speak any kind of letters and numbers here. Don't say 270. I'll take you to that pronunciation point also in today's or tomorrow class, so that I'll show you there what are the mode of speaking each and everything. Reading the altitudes, reading the directions, reading the notes. I don't say it now because first you need to be very clear with the definitions. Next point is stop way. Stop. Rukna. Stop way. The question, I think this 10th number point is stop way. And also please don't bother about this de-icing area. Okay. This is not popular in Indian aviation because we are not So a, your screen is not visible. my screen is not visible. Sorry, sorry. Thanks. थैंक यू आप ऐसे ही पूछ पूछ के थोड़ा सा अटेंटिव होके आपको क्लास में पढ़ना है हमेशा राइट you assume it right my screen is not visible. See, now visible to you? Yes, sir. So it was runway designator, means the number that is given on runway is actual the angle between center line of a runway and earth magnetic field, okay, especially from magnetic north, so that you can conclude angle. Now the first and second runway lightings you may see sometimes. De-icing area you won't see in India because in India हम लोग वैसे रीजन में नहीं पढ़ते हैं जहाँ पे बर्फ गिरे most of the time. And then also there is a point called runway pre-threshold. That is also you will not see in today's aviation. Then
Now, this is stop way. Stop way. See, you can see here stop way. क्या होता है? When you are going to land, the stop way you will see both side. In today's aviation, you will see the stop way both side of the runway. This is just a standard example, right? क्या होता है? You can have take off run. कल पढ़ाया था ना रनवे क्यों बोलते हैं? बिकॉज एयरक्राफ्ट रन्स ऑन द रनवे, राइट? आप टेक ऑफ लेने के लिए जो एयरक्राफ्ट का दौड़ लगाते हो ना, जो टेक ऑफ रोल बोलते हैं या टेक ऑफ रन बोलते हैं, और यहां से फिर टेक ऑफ कर जाता है लाइक दिस, राइट? व्हाट इफ कंट्रोल्स फेल्स? एलिवेटर काम नहीं किया, एयरक्राफ्ट टेक ऑफ नहीं किया, वो तो ऐसे ऐसे चलते चला जाएगा और यहाँ पे आके वो टक्कर खा जाएगा किसी न किसी से. सो टू प्रिवेंट दैट, एंड ऑफ द रनवे का मटेरियल थोड़ा सा लूज रखा जाता है, so that aircraft can stops if that is exceeding takeoff run. ठीक है? So this area is called stop way. Are you getting this point? What is stop way? Yes, sir. Runway के end का area, and this is very common question of question number 5. They may ask you what is the stop way, what is the clear way. So everyone please note it down. Stop way. These questions are important. You are not going to read it again because these are very basic things, but you need to do master it. Okay. See, a defined area on the ground. Ground means on the runway. At the end of takeoff run available, prepared as suitable area. What does it suitable area really means? उसका पेवमेंट, उसका जो पक्का होता है थोड़ा सा लूज मटेरियल का होता है, सो दैट एयरक्राफ्ट का टायर व्हील उसमें फंस जाए, एयरक्राफ्ट जमीन में धंस जाए और वो रुक जाए. अंडरस्टूड? In which aircraft can be stopped in case abandoned takeoff. टेक ऑफ नहीं कर पाया किसी रीजन से तो उसका वहां पे एयरक्राफ्ट रुक जाए. Everyone got it? Then one more thing came, and that is called clear way. स्टॉप वे का डेफिनेशन सबने लिख लिया? किसी का कुछ Yes, रहे? sir. Okay, done. Now one more thing is there, and that is clear way. Clear way, is that written there? No. क्लियर वे. क्लियर वे क्या होता है? अगर आपका एयरक्राफ्ट टेक ऑफ किया तो यहीं पे अगर आप बड़े बड़े बाउंड्रीज दे दोगे, बड़ा बड़ा घर बना दोगे, सो इफ इन एनी मीन्स अगर कभी एयरक्राफ्ट का टेक ऑफ का एंगल इनएप्रोप्रिएट रहा, यहां से टेक ऑफ लिया, वो क्लाइंब नहीं कर पाया इन दिस मैनर, अगर आप यहीं पे घर बना दोगे, यहीं पे बैरियर बना दोगे, एंड बाय एनी मीन्स अगर टेक ऑफ नहीं हो पाया एयरक्राफ्ट का इन दिस एंगल, तो उसका तो एक्सीडेंट हो जाएगा. सो यू नीड टू हैव सम क्लियर एयर स्पेस अहेड ऑफ रनवे सो दैट aircraft can do maneuver after initial takeoff. So this is the definition for you. Please note it down. A defined area on the ground at the end of takeoff run available, prepared as per suitable area, or you can write prepared as suitable airspace.
over which an aeroplane can make a portion of its initial climb. See what is important? Initial climb. जब एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा होता है, देयर मे बी a chance कि वो अपना इनिशियल क्लाइंब थोड़ा सा अप डाउन कर सके एज पर द परफॉर्मेंस ऑफ द एयरक्राफ्ट. तो aircraft can make a portion of its initial climb to a specified height. Is that clear to you? Clear way? समझ गए सब लोग? Any confusion there? No, sir. Now one more thing come, airway. Airway. Airway means corridor. अगर एयरवे का भी डिफिनेशन समझना, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन. एक ऐसा वही आता है, पूरा फ्रेज लिखा रहेगा. कैसा लिखा रहता है वो? लिखा रहेगा some kind of aeroplane it will give. लिखा रहेगा मुंबई to भोपाल radial is a AWY. Means you need to understand that is airway. Let me show you that question directly so that you can understand what is the importance of this airway. See what is written there. ATC route, air traffic services route, Golf 705. What is route in actual? This is the route. ये जो lines है ना, इसको बोलते हैं route. We'll come to this later. This is an airway. For certain airfield, route 705 is an airway. Everyone got it? So what airway really means? Airway means a corridor of a controlled airfield. Okay? Airway means a corridor of a controlled airfield. Otherwise, you can also write as per standard definition. Airway is controlled in the form of a corridor. And how it can be controlled? If it is having navigation aid. Navigation aid means it is identified with bearing. Bearing means your directions. And it has been identified in charts. Everyone getting my point? Yes, How an airway can be controlled. So have you noted down the definition of airway? Everyone. Now, the center line of runway. See here. Okay. Please note down the colors for taxiway and runway. This is very important because आपको रात में भी एयरक्राफ्ट फ्लाई करना है, आपको दिन में भी एयरक्राफ्ट फ्लाई करना है. सो रनवे एंड टैक्सीवे का कलर फिक्स किया गया है. ठीक है, आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है with the color of runway and taxiway. Understood everyone? Please note it down. Colors of taxiway. Let me show you here on the screen. ठीक है, Is that visible to you? टैक्सीवे का जो एज लाइट होता है वो ब्लू कलर का होता है एंड सेंटर लाइन ग्रीन कलर का होता है. व्हाट डज इट रियली मीन? ये जो टैक्सीवे है ना, इसका एज लाइट, दिस इज एज, ये होता है ब्लू कलर का एंड
इसका सेंटर लाइन होता है ग्रीन कलर का। सिमिलरली रनवे का एज लाइट व्हाइट कलर का होगा एंड जो सेंटर लाइट होता है वो एक फॉर्मेट में होता है। We'll take this topic to the next class. Sorry, means next after 5 minutes of break, because this is the time to get a break. We'll read about the lightings of airport after break. Okay, is that okay to you? We'll meet again after this end of the session. Have some break. We are going to read about the lightings. Okay. So where I was to show you the lights on an airfield. Is this screen visible to you all? Okay. So assume this is a runway और आपको ये हमेशा डार्क ब्लैक कलर में दिखेगा, ठीक है। Why? ये हमेशा ऐसा डार्क ब्लैक कलर में दिखेगा। इसको बोलते हैं असफाल्टेड। जो अपना रोड होता है ना ब्लैक कलर का, वो असफाल्ट से बना होता है। असफाल्ट मीन्स पत्थर एंड ब्लैक कलर ऑफ कोल तार। जो अपना सिंपल एनएच वाला रोड होता है ना, जो ब्लैक कलर का होता है, वो होता है असफाल्टेड, ठीक है। एंड जो पक्का करना होता है, कच्चा रोड मीन्स मिट्टी का रोड, इसको जो पक्का किया जाता है मीन्स इसको थोड़ा सा टफ बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज पेवमेंटिंग। पेवमेंट मीन्स पक्का करना, ठीक है। तो एक वेरी पॉपुलर क्वेश्चन आता है इन द एविएशन, pavement classification number shall be more than aircraft classification number. Got it? What is it? Pavement classification number shall be greater than aircraft classification number. And what is this classification number? This is the strength of the ground. If your ground is this, अगर आपने रनवे बनाया है, ठीक है, आपने उसकी असफाल्टिंग करा दी। असफाल्टिंग मीन्स जो गिट्टी एंड कोलतार यूज होता है ना ब्लैक कलर के रोड पे, आपने उसकी असफाल्टिंग करा दी, तो वो एक पेवमेंट बन गया। नाउ इसका स्ट्रेंथ इज डिनोटेड एज पेवमेंट क्लासिफिकेशन नंबर, दैट इज पेवमेंट क्लासिफिकेशन number. Is that clear to you all? Now, Yes, sir. there is a term ACN, aircraft classification, similar to that only, classification number. And what does it really mean? The impact aircraft can make on the ground, either by rolling over it, or by touching it down while
landing. Got it? So your pavement classification number shall always be greater than aircraft classification number. Now come to the topic asphalted runway. Asphalted मतलब समझ गए ना क्या होता है? asphalt means जो गिट्टी कंक्रीट करवाया जाता है ना ब्लैक कलर का, उसको बोलते हैं asphalt. ASHPHALT, asphalt. ये जो गेम होता था ना asphalt 8, similar to that. This is L, right? Now आपका जो रनवे है वो है ब्लैक कलर का, ठीक है? इसके एंड में जो लाइट्स लगे रहेंगे एज पे, रनवे एज पे जो लाइट्स रहेंगे वो रहेंगे व्हाइट कलर के. व्हाइट कलर इधर है कहीं पे? यस. रनवे एज पे जो लाइट्स रहेंगे, जो ऐसा आइदर फुल रहेगा या डॉटेड रहेगा, ठीक है? या फिर अगर डॉटेड भी रहेगा तो इतने नजदीक नजदीक में रहेगा कि बाय द सीरीज ऑफ इट यू कैन सी दैट this is a straight line. Is that clear to you all? Yes, sir. Now center lines का जो कलर होगा that will be in such a manner कि स्टार्टिंग में व्हाइट रहेंगे, ठीक है? बीच में थोड़ा सा, इफ यू डिवाइड दिस रनवे ऑन अ 3 पार्ट, स्टार्टिंग में व्हाइट कलर रहेगा, बीच में व्हाइट एंड रेड मिक्स रहेगा, एंड at the end of the runway it will be of red in color. Everyone got it? This is very popular question, that the edge light of runway is of white in color and the center line is white in beginning, white and red in middle, and red in the end of runway. This is very popular question asked many times in the question number 5. Everyone got it? Can I jump it to the taxiway now? Has everyone Yes, noted? sir. Has everyone noted it down? Done. Now, similarly for the taxiway. टैक्सीवे आपका जो रहता है वो अस्फाल्टेड नहीं रहता है, वो कॉन्क्रीटेड रहता है. क्या रहता है वो? कॉन्क्रीटेड. और टैक्सीवे कैन बी अस्फाल्टेड एंड कैन बी कॉन्क्रीटेड. आपके गांव में दो तरह के रोड देखते हो ना, एक सीमेंट डाल के मोटा लेयर वाला बनाया जाता है जिसको बोला जाता है ढलाई करके बनाया गया है, एंड एक होता है ब्लैक कलर का रोड जो कि एनएच पे बनाया जाता है, मेनली स्टेट हाईवेज और एनी फास्ट ट्रैक रोड्स, राइट? तो जो गांव वाला गली मोहल्ले वाला रोड होता है ना, सीमेंट वाला कंक्रीटेड, वैसा होता है आपका एप्रॉन एंड टैक्सीवे. कैन बी ऑल्टर्ड एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी, जो भी उसको लगे बेटर वो करवा सकते हैं, बट जनरली वैसा ही होता है. तो जो टैक्सीवे होता है which is linking an apron to apron, an apron to runway, or between two portions of an airfield. टैक्सीवे का जो एज लाइट होता है, एज लाइट मीन्स टैक्सीवे के एज का लाइट, दिस कैन बी ऑफ ब्लू इन कलर. ब्लू आइदर वो स्ट्रेट लाइन होगा स्ट्रिप का, और अगर वो सिंगल सिंगल भी होगा तो इतना नजदीक होगा
on a line you can see it as a line only, and जो taxiway का center line होगा that will be of green color का. Got it? This is very popular question, right? So runway का जो edge light है that is of white in color, and center line white in the beginning, white and red in the middle, and red at the end. ठीक है? Sorry. And so, am I audible now? Yes, sir. Okay. Just confirm one more time. Now, am I audible? Audible? Yes, sir. Yes, sir. So, in the edge light of taxiway, light is of blue color and center line is of green in color. Why I am showing this to you? This question is very popular. Asked many times. What is the colors? Understood? So this has to be known to you. Everyone got it? If this is a runway to you, so in the starting of runway, this is of white in color, and if this is a middle section, this will be of white and red mix, and at the end this is red. So it shows alert to you. एविएशन में टर्म है ना जहां पे भी आपको व्हाइट एंड ब्लू कलर का लाइट दिखे मींस दिस इज नॉर्मल नेविगेशन, नॉर्मल सिचुएशन टू यू. Wherever you see amber, yellow, this is caution, and wherever you have seen red, you are going to meet some accident or this is an alert to you. Similarly, runway भी बोलता है if this is of white color, you are permitted, that's okay for you. If this is white and red mix, means you have on the middle of the runway, now you can apply your brakes. And if you are on the red lights, आप runway के end में आ चुके हो, anyhow you need to stop. Got it? So stopway we have got it. As marking lights you have got it. This is of no need. Helicopter stand is not a part of airport, but helicopter stand Hello. is. Hello. Yes, Sir, yes. in bidirectional runways, how is the lighting done then, sir? See, there is a control of lights every time, right? You can, airports operator can have control of lighting. आजकल के जो LEDs आते हैं मल्टी कलर आते हैं. Am I right? Yes, sir. So at the particular time, जिस भी डायरेक्शन का रनवे ओपन रहेगा, लाइट रिवर्स कर दिया जाएगा. Got it? This is not a complicated thing. But by the way, good question. Doubt होनी चाहिए. ठीक है. Then you may see helicopter stand. This is not a mandatory part of airfield, but you can understand easily. Where an helicopter can land, this is helicopter stand for you, right? Fire station and airline services. Instead of fire station and airline services, you need to understand an airport shall always have a fire station and a QRT and follow me vehicles. These four things airport shall always have. QRT. QRT means quick response team. QRT, quick response team. Follow me. अगर आप कहीं रास्ता भटक जाओगे on airfield, on an airport, कुछ भी guidance चाहिए, you can call follow me. Emergency services, ES, ठीक है? और FFS,
firefighting services. You are going to use it on your regular calls. जब आपका ब्रेक शॉट होगा एयरक्राफ्ट का, you are going to make a pen call, means emergency situation. इंजन में फायर हो गया, you are going to call firefighting services. In short, you can write FFS. You can note it down now also. This is very important. You can have a teams of first aid doctors, that is commonly called as medical teams. Right? These 5 things an airport can have. एंड बीच में एक ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिलेगा कि आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी से पूछना पड़ेगा कि आपके एयरपोर्ट पे क्या क्या है. इन जनरल तो दिस थिंग्स शैल बी अवेलेबल ऑन द एयरपोर्ट, बट आपके एयरपोर्ट के पास मेडिकल टीम है भी कि नहीं. लाइक फॉर एग्जांपल HL एयरपोर्ट इन द बेंगलुरु ओनली, आई डोंट थिंक दे हैव मेडिकल टीम्स, बट in the Kempegowda International Airport, Bangalore, they have medical teams. Am I right, Abhishek? Yes, sir. Have you checked that HL Airport till now? No, sir, not yet. Okay. Then this bus stop, taxi stand, these are the additional things that can be available on the airport, but this is not a part of an aerodrome. Now, very important thing is holding position. This is holding position. Holding position means the area of, this is the very frequently asked question, holding position. The area before an runway an aircraft shall wait and request for clearance before entering to the runway. This is the taxiway. The end of an taxiway, जहां पे एयरक्राफ्ट को पहले परमिशन लेना पड़ेगा बिफोर एंटरिंग टू द रनवे. विथ whom? With tower. So this area is called runway holding point. This area is called runway holding point, and this usually is marked in of yellow strips always. ठीक है? These areas are called runway holding point. So if ATC asks you to hold short runway 27, this is runway number 27. If this is visible to you on screen, is that visible to you guys? This is runway 27. So if ATC asks you to hold short runway 27, what does it really mean? You need to stop your aircraft here only on the runway holding point. Is that clear to you? Everyone, is that clear to you? Everyone understand what is runway holding point? Yes, sir. Okay. उसको लिखवाने की जरूरत है अलग से definition. You need to write because this is important question to you. They may ask you. Okay. लिखवाई देते हैं. So everyone please write for the holding point or runway holding point. What you can write? A bay. Bay you understood? Bay means क्या होता है? एक straight line और एक area. A bay or dedicated area to make the aircraft wait for the clearance. For what? To make the aircraft wait for the clearance. Understood? Everyone? Yes, sir. Everyone has written this? A dedicated area or bay to make the aircraft wait for the
clearance. Someone has something dropped in their chat box. Whatever you missed, right? Yes, okay. So that list. Hemkant, what did you ask about that list? I think 20 minutes ago he has dropped a chat and I hadn't noticed. Is there anything important? सर वो जो रनवे में 1 से लेके शायद 19 तक वो जो लिस्ट है उसका बारे में पूछ रहा था। अभी उसका क्लियर हो गया या एनीथिंग इज देयर डाउट? कुछ है? मैं कुछ नोट डाउन किया हो सर, पहले मैं रीड करूंगा, उसके बाद कुछ डाउट आएगा तो कल क्लास में शेयर करते हैं। Very good. That's a good way to learn. So each and every area of airport you had learned till the time, right? आपने रनवे होल्डिंग पॉइंट भी पढ़ लिया, ठीक है? टैक्सीवे लाइट्स, सेंटर लाइन राइट्स, रनवे लाइट्स एंड पाथ्स, ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है, किसी किसी एयरफील्ड में रनवे के पास एक एरिया बोला जाता है, उसको बोला जाता है डंबल एरिया। डंबल एरिया, DUMBELL, sorry to write here. What is that area? Dumbbell area, ठीक है? What is the dumbbell area? Anyone, any guess till the time? कुछ है, किसी को आइडिया? What is the dumbbell area? Abhishek, have you seen any dumbbell No, area? sir. No idea. सर रनवे लास्ट, एकदम लास्ट एरिया जो है। You may have seen sometimes the last of a runway as a dumbbell area, but that is not exact definition for that, and that is also not a designated point for that. Dumbbell area means एक ऐसा area apart from the runway, apart from the runway. Most of the time you can see apart, बहुत दूर, away from the runway, ठीक है? वहां पे if you want to perform high pressure engine run up, high pressure engine run up on full throttle, full idle, understood? Ground run you can make on apron. Ground run means समझते हो ना, इंजन चालू करके you can make some checks, you can perform on apron on idle power, but high pressure engine run can be performed in the dumbbell area only. So dumbbell area you may have seen, you may see in the far end of runway. This is far end of runway. You cannot say the end of runway. Far end of runway, away from the runway. रनवे से दूर रहेगा थोड़ा, ठीक है? रनवे के एंडिंग में रहेगा, दूर रहेगा, और जो डंबल एरिया का स्लोप होगा वो थोड़ा सा टिल्टेड रहेगा, ऐसा हमेशा। सॉरी, थोड़ी सी गलत ड्राइंग बन गई, ऐसा स्टैंड नहीं होता है नीचे में हमका। ये मिलेगा आपको डंबल एरिया। इफ दिस इज ग्राउंड देन दिस विल बी डंबल एरिया। आपके एयरक्राफ्ट का इंजन यहाँ ले आओ। इफ योर एयरक्राफ्ट इज ऑफ टी टेल टाइप, दिस इज वेरी गुड। लाओ, जितना खाना पीना उसने बचा के रखा है, कंज्यूम नहीं कर पाया, निकाल दो। दैट एग्जॉस्ट विल गो अपवर्ड। और व्हाई दिस इज मेड इंक्लाइंड? बिकॉज वो स्पीड में कोई जेट ब्लास्ट नहीं क्रिएट करे। अगर जेट ब्लास्ट क्रिएट होगा तो किसी को क्रैक कर देगा, किसी को जला डालेगा। स्पीड में अगर एयर आएगा, जेट ब्लास्ट होगा तो किसी को जला देगा ना। तो उसको अवे करने के लिए एयर को सर्कुलेट करके अपवर्ड ऑन द एटमॉस्फेयर रिलीज कर दिया जाता है। गॉट इट? सो टुडेज क्लास वाज ऑल अबाउट airfields, markings and designated points of airport. Now the very popular question, difference between airport and aerodrome. Abhishek, would you like to give it the definition of it if you know? Sir, aerodrome, any defined area, it can be said where that place is made for the aircraft arrival and departure.
But airport includes terminals and all. Yeah, right, right. ठीक। एयरपोर्ट आप किसी भी एयरफील्ड को बोल सकते हो जिसके पास थोड़ा सा एप्रन हो, एक रनवे हो, एयरक्राफ्ट आए, लैंड करे, रेस्ट करे, जाए। दैट कैन बी कॉल्ड एज एन एरोड्रोम। जहां पे पैसेंजर फ्रीट, फ्रीट मीन्स सामान, माल, उत्पाद लोड होना स्टार्ट हो गया, कॉमर्शियल पर्पज से पैसेंजर्स का लोडिंग अनलोडिंग स्टार्ट हो गया, तो वहां पे टर्मिनल बिल्डिंग्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी, पैसेंजर का रेस्ट एरिया हो जाएगा, टैक्सी स्टैंड, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, पार्किंग डेक्स, रिपोर्टिंग एरिया, ये स्टार्ट हो जाएगा। तो वही एरोड्रोम एयरपोर्ट बन जाएगा। एम आई राइट? एक पोर्ट जो वर्ड यूज होता है, दैट इज फॉर द लोडिंग एंड अनलोडिंग। सिमिलरली इन केस ऑफ हेलीपैड, if there is a simple stand, this is helipad। अगर यहाँ पे पैसेंजर्स को बिठाने का प्रोविजन आ जाए, ये हो जाएगा हेली पोर्ट। Understood everyone? Any doubt? No, sir. Then ये जो एप्रन है ना, एप्रन, मैंने एक जगह पे बोला था ना, एप्रन का भी कंट्रोलर होता है फॉर द डेफिनेशन ऑफ एटीसीज, आई गेस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एटीसीज में बोला था कि एप्रन का भी ये एप्रन कंट्रोल होता है, राइट? तो एप्रन कंट्रोल जो होता है उसका एक और ऑल्टरनेटिव नेम होता है एप्रॉन मैनेजमेंट सर्विसेज। दिस कैन बी ए थर्ड पार्टी एजेंसी अदर देन द एयरपोर्ट, एंड देयर इज एन definition which called as एरोड्रोम ऑपरेटर और एयरपोर्ट ऑपरेटर। ठीक है, एरोड्रोम ऑपरेटर और एयरपोर्ट ऑपरेटर। Why these things are important? Because sometimes you may see airports has been made by एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बट आप देखते हो दिल्ली एयरपोर्ट का नाम है जीएमआर एयरपोर्ट। व्हाट इज जीएमआर? जीएमआर इज एयरपोर्ट ऑपरेटर। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या किया? कुछ नहीं किया। काम किसने किया? पीपीपी। पीपीपी मॉडल है ना गवर्नमेंट का, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। पब्लिक यूजेस के लिए जो भी कंस्ट्रक्शन होगा प्राइवेट कंपनी आके बनाएगी बेस्ड ऑन द पार्टनरशिप। अपने मोदी गवर्नमेंट का ये है ना फंडा अभी के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अडानी ग्रुप आके एयरपोर्ट बनाएंगे लखनऊ का, कंट्रोल्ड बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बट ऑपरेटेड बाय अडानी ग्रुप। सिमिलरली फॉर द बेंगलोर एयरपोर्ट, अपना जो एयरपोर्ट ऑपरेटर है या जो एरोड्रोम ऑपरेटर है कौन सा है? BIAL। एयरपोर्ट का नाम है केम्पे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बट एयरपोर्ट ऑपरेटर इज BIAL, बेंगलोर इंटरनेशनल क्या है? एयरपोर्ट लिमिटेड। अभिषेक, would you like to say the full name if you know? It's a Bangalore International Airport Limited. Was correct. I'm not working near to the international airport now, that's why I don't know, but I knew it. It was a BIAL. So ये हो गया एयरपोर्ट ऑपरेटर। These are the third party operator which are looking for the operation management to the apron to the airports। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन था ना, while we are checking the ground radio controllers, ये सब जो मैनेजमेंट सर्विसेज के ऑफिस हैं इनके पास रेडियो स्टेशन होता है। सो यू मे सी सम क्वेश्चंस इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ मेडिकल टर्म्स, you need to report either apron management services or airport management services।
Understood? So are these two words clear to you? Airport management services and apron management services? So these services, they sit at the tower itself, or ATC tower, or where they sit? A No. different. They may have different office out of the terminal buildings. They may have different office. But ATC के पास उनका contact रहेगा हमेशा. For an example, टावर में ATC बैठ रहे हैं. An aircraft is about to land. एप्रॉन पे मार्शलिंग करवानी है. कौन आएगा? एप्रॉन मैनेजमेंट सर्विसेज और ग्राउंड हैंडलिंग टीम. ATC will report the apron management services. Aircraft aa raha hai, go and handle those ground things. Understood? They may have different offices, but all these management services is connected with tower. Got it? Yes, sir. ठीक है. So I think that is enough for today. We have understood all those terminology in a airport, right? We'll have something different on other classes. Sir, hello. Yes, yes, yes. Sir, can you please explain once again that FIR? Actually, at that time, I was not able to get that point. Okay. We'll get it later also, because this is very important thing. But let me show you. See, we have seen FIR here. Abhi screen visual hai na? This is very important thing you are going to get on the future classes. This is FIR, Flight Information Region. We need to get it. Don't worry. हम लोग इसको पढ़ेंगे दोबारा से. This is very important topic. Without Okay, this, you cannot understand the airport codes easily. This is Flight Information Region. इंडिया को डिवाइड कर दिया गया कुछ कुछ रीजन के हिसाब से कि अपने रीजन का फ्लाइट इंफॉर्मेशन तुम हैंडल करो. ठीक है, ताकि इजीली गवर्नेंस हो सके. मैं 4 भाग में डिवाइड कर पाया क्या? नहीं, सारा ग्रीन ग्रीन हो गया. 1, 3 एंड 4. ऐसा है सर. अपने रीजन का मैटर तुम संभालो. सेंटर में लोड देना टफ हो जाएगा ना. चलिए, we are going to get it. Don't put in the parking lot. We'll get it very soon. See, I think this is on our 4th page only. Not a problem. So we had this aeronautical phonetics. We had few days ago, right? So ahead of that only, we are going to read some more important phrases related to the readings. Like Abhishek pronunciate it very good manner. If we are going to read this 123.45, okay, instead of point we need to say decimal. Decimal. Is that clear to you, Emkant? Yes, sir. Then there is reading of 100. 100 is as similar to our 100. Nothing difference in that. Instead of 1000, we need to say 1000. But 1000 chalega. No need to worry. Is that okay? And फ्लाइट लेवल मैंने उस दिन बताया था ना, क्या होता है फ्लाइट लेवल अभिषेक? 3000 फ्लाइट लेवल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 3000 फीट. Flight level 300. Sorry, 30. Okay. Flight level 30. Again, not a problem. Sorry. Flight level 30. What does it really mean? We need to multiply it to 100. So it will make 300. But that day I had said you there is a transition point, right? So below 4000 feet,
We are not saying it flight level. That is level only. Am I right? Yes, sir. Got it? That's why I had asked especially. Sorry, not a problem. Good, by the way. So flight level can be read directly at flight level 180. Don't say it flight level 180. ठीक है, इसको कैसे पढ़ा जाएगा? Flight level 180. Like Abhishek had said, runway 27. He did not say it runway 27. Similarly, we need to say flight level 180. Okay. And to read the headings, also we need to read in a clear each and every letter pronunciation. We need to say heading 180. Got it? These are the examples out of reading. This is being important because after some classes, we are going to use it in a very well manner. So that time, please don't say flight level 180, right? Then in the case of wind direction and speed, we need to speak it as it is. Winds 200 and the speed 25 knots. In the distance also, if the distance is 17 nautical mile, what we need to really say? 17 nautical mile. Is that clear? जहां भी आपको कभी भी ऐसा नंबर दिखे ना और कोई छोटा सा सेंटेंस दिखे 2 से 3 लेटर का, ए बी सी या 4 मैक्सिमम 4 लेटर्स का, ऐसा कुछ दिखे ना, तो ऑलवेज ट्राई कि इसके एक एक लेटर को एक्सप्लेन कर दिया जाए, सो दैट इट वोंट मेक कंफ्यूजन टू यू और द लिसनर. कहीं भी आपको ऐसा मिल रहा है ना, ऑलवेज से इट 200, ऑलवेज से इट 1600, डोंट से इट 1600. It is better to read each and every letter. Okay? And in this manner also, if you find some letters of 3 to 4 letters, some words of 3 to 4 letters, instead of saying Zulu, better to say Zulu uniform, Lima uniform. Okay? अब Zulu को नहीं बोल देना है उतना स्प्लिट करके. This is just for example. If you see sometimes BBN, so better to say Bravo, Bravo, November. Okay? So that listener may clarify as per your words. Understood? So these are the reading techniques of some of the wind speed, flight levels, and some of the transponder codes also. If your transponder code is 2400, instead of saying 2400, what is better to say? 2400. Okay. Similarly, about your altitude, if your height is 3000 feet, don't say 3000 feet. You can say 3000 feet. But this is also looks odd. You will get it tomorrow. Tomorrow I'll show you the reading of altimeters. This is very important and good one. Okay. So that's enough for today. We'll take a leave from now. We'll see you tomorrow. Everything that you had noted in your notebooks, please make revision. Answer देते टाइम आप notebooks को देख सकते हैं so that you can have a clear vision of your topics. उससे याद करने की, आंसर करने की जरूरत नहीं है. While answering, आप अपने notebook पलट सकते हो. Okay? We'll take a leave. We'll see you tomorrow. Tomorrow also we have some of the interactive session. Okay, everyone. Good night. Have a tight sleep.